Assalamu alaikum everyone, and welcome to our first webinar of the Leadership Talk series by Jaffer Group. We planned these sessions to bring to you the industry knowledge by our leaders and that can benefit the budding future leaders in their growth and development. And these interactive sessions will also provide them a memorable way to sharpen and understand the skills that are needed to become business leaders in future. So our today's topic is focusing on purpose-led organizations. And our speaker and mentor today is Mr. Wakarul Islam. He's a director of Jaffer Group and CEO of Jaffer Business Systems Private Limited. Wakar Sahab does not need much introduction because he's a very well-known figure in the industry, and he has spent over 30 years in reputable and renowned multinationals. He's a marketer par excellence and an inspirational leader and known for his out-of-box approaches. So, Assalamu alaikum, Wakar Sahab. Walaikum assalam, Gulrukh. Thank you very much for having me. How are you, sir? Thank you for taking time out to address our audience. And it has been your passion to mentor young people and develop them in their careers. This is what you've been doing at the Jaffer Group as well. So, Wakar Sahab, looking at the topic that you have proposed, can you initially just tell us what do you mean by a purpose-led organization? And what is its importance and benefits for the community and economy? So over to you, Wakar Sahab, and then I will keep coming in between and I'll keep asking you questions. Sure. Thank you, Gulrukh. First of all, I'm delighted that we discussed and picked this topic because I think this topic, in my view, should be very dear to the heart of every existing leader, potential leader, and also young people who are aspiring to become leaders in times to come. क्यों जरूरी है ये और इस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा बात करना क्यों जरूरी है इसको थोड़ा सा let's try and delve into it. और मैं I would want to relate it to first each one of us before I come to the organization. अगर मैं जो लोग भी ये वेबकास्ट देख रहे हैं उनसे पूछूं कि एज एन इंडिविजुअल लेवल आपका मकसद क्या है इस दुनिया में, हाउ मेनी ऑफ देम विल से मेरा मकसद पैसे कमाना? Possibly very few, if at all, right? The reason you exist has to be much beyond money. This is true for individuals. It's exactly the same for the organizations as well. Now, it doesn't mean you don't need money, but what you do with money defines the purpose. So, किसी भी individual के लिए या organization के लिए बहुत अहम बात है कि they define a meaning of why they exist beyond the financial gains that typically people talk about. मैं अगर आपको एक बहुत relevant या बहुत आसान सी मिसाल दूं, which I think in November 2021 everyone will be able to relate to, and it's say this T20 World Cup which is currently being played, and mashallah Pakistan team has made it to the semi-final in an incredible run towards it. अच्छा, उनका कितने प्लेयर्स हैं जिनसे हमने सुना है कि मेरा मकसद तो पैसे कमाना है, या उनका मकसद है to bring glory to Pakistan, and because of that they are giving their 200-300%, right? And you will realize that none of them you've heard in the last, say, 2 weeks or 3 weeks since the time this World Cup has commenced, none of them said that if I win, I'll make a lot of money. Everyone is talking about this will help bring cricket back to Pakistan. This will help us bring glory to the country. And the entire country is engaged in the cause along with these 16 or 18 or 20 men who are making us proud. This is what purpose does to individuals. This is what purpose does to organization. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, in terms of purpose-led organization and how their thinking works. So imagine a pharmaceutical company जिसका purpose है saving lives.
beautiful purpose, because this is why pharmaceutical companies should exist. Now they could have easily said हमारा मकसद है बहुत सारे पैसे बनाना, right? But they didn't say that. They said मेरा मकसद है लोगों की जान बचाना. Now, how does it reflect in the decision making? And that's very important because बहुत सारे लोग जब पर्पस की बात करते हैं वो कहते हैं जी बिजनेस का तो मकसद पैसे बनाना होता है. Nobody is saying you don't make money, but how you make money and what you do with money defines the purpose of the organization. तो अगर मैं ये saving lives आपको मैं is the purpose of a pharmaceutical organization, तो सोचें अगर उनके सीईओ के पास एक चॉइस आए और वो कहें कि हमने एक मेडिसिन बनानी है, उसमें हम बी ग्रेड इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं जिससे जिंदगी को शायद इतना फर्क ना पड़े लेकिन उसकी रिकवरी टाइम लंबा हो जाएगा. बट इफ वी डू दैट देन our margin of profit will go up because we'll be using a less quality material compared to what we should be using. However, remember the purpose of the organization is saving lives, right? So as CEO, would he go for money or would he go for living the purpose, which is about saving lives, which means he cannot compromise on the ingredient. It doesn't matter कि अगर आपने पैसे ज्यादा बन सकते हैं. तो पर्पस आपको एक मकसद की तरफ लेके जाता है और वो मकसद एक टिपिकल नंबर्स या फाइनेंशियल ड्रिवन ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है. कैसी लगनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन? जो पर्पस लेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सबसे पहले बहुत क्लियरली डिफाइन करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं. जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिफाइन करता है कि वो क्यों एग्जिस्ट करता है, और जब वो डिफाइन कर लेते हैं वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं. मैंने आपको T20 की मिसाल दी, मैंने आपको आई गिव यू एग्जांपल ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. देन इन देयर एंटायर डिसीजन मेकिंग, their entire culture of the organization moves towards that purpose. And how it benefits people is that they have a much bigger purpose or much bigger meaning to their job than just coming to the job and say at the end of the month they'll make money and they will get their salary. They think they're earning their salary by living a purpose which contributes to a much bigger cause than just living for themselves. So individuals or organizations में कोई फर्क नहीं होता when it is about purpose. And it is extremely important that organizations move away from making money as the purpose, because making money as the sole reason for existence makes you make decisions which can kill societies, which can kill communities, which can kill your value system, whereas the purpose keeps everything intact. So I hope that answers the initial question that you put forward. You're on mute, Gulru. जी ऑफ कोर्स वकार साहब, थैंक यू सो मच. वकार साहब ये बताइएगा कि एज यू हैव डिफाइंड व्हाट अ पर्पस लेड ऑर्गेनाइजेशन इज, हाउ डज अ पर्पस लेड ऑर्गेनाइजेशन contribute in the growth of or exposure or development of its employees? For example, those people who are what would be their purpose or goal in life. So how does these purpose-led organizations handle their people and how do they grow their people? So देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि the moment you say I'm doing a job because I need to earn at the end of the month, now that's a very introvert, that's a very individual kind of a purpose that you are living with. But the moment you say कि मैंने काम सैलरी तो अर्न करनी है लेकिन वो अर्न करने की वजह से आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू अ बिगर कॉज, it changes the whole perspective of individuals who are working there, and it helps them move the organization or move their own career in a very different way rather than thinking about themselves. As I gave you the example कि आप किसी भी इंडिविजुअल से पूछ लें, और मैंने आपको T20 की आजकल क्योंकि बहुत रेलेवेंट मिसाल है एग्जाम्पल दी कि none of them was talking about money. They have a much bigger purpose because of which they are giving their 500%. Does it contribute to their individual families, communities, well-being as well? You bet it does.
simply because not just they are looking at things from a much wider, much bigger, much stronger fulfillment perspective, but the whole country is going along with them. So imagine if in an organization is able to connect the purpose for which they exist. जैसे मैंने आपको एक सेविंग लाइफ की मिसाल दी, तो उस पर्पस से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट हो जाए, तो आप सोचिए हर आदमी शायद एट द एंड ऑफ ईच डे विल बी कमिंग अप विद स्टोरीज दैट हाउ माय मेडिसिन saved lives of people or helped them recover faster. How much more fulfilling can it get than any individual going to their friends, circle, community and saying, you know what, we saved this many lives this month because we don't compromise on the ingredient or the formula that we use, come what may. If it means making less money, that is fine, as long as we are living the purpose, which is way beyond making money. And again, मैं बार बार ये इस चीज को reiterate कर दूं कि पैसे बनाना बुरी बात नहीं है, आप जरूर पैसे बनाएं, लेकिन पैसे से क्या करना है उसको डिफाइन करना चाहिए. तो हम एज इंडिविजुअल्स और एज ऑर्गेनाइजेशन वी एग्जिस्ट फॉर अ पर्पस which can never be money but what we do with it. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मिसाल अपने करियर की देखता हूँ. मैं जिस जमाने में बाहर रहा करता था, तो हम एक किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी लीडरशिप टीम के लिए. उसमें मेरी असिस्टेंट भी थी और उसमें एक सवाल ये था कि आप नौकरी क्यों करते हैं. एंड एवरीवन गेव एन एग्जाम, गेव देयर ओन आंसर. लेकिन मेरी असिस्टेंट ने उसमें जवाब दिया कि जी मैं तो पैसे अर्न करने के लिए करती हूँ. सो दैट्स माय ओनली reason of coming to work. And then, the facilitator tha, he wanted, because I was her line manager, he wanted me to have a dialogue with her just to see how the conversation can move forward. And I asked her, no, I disagree that you work for money because you don't. तुम करोगी क्या पैसे से, क्यों कमाना चाहती हो? उसने कहा जी मैं कमाना इसलिए चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे पाऊँ. And then I said, this is the purpose of why you are doing a job. Your purpose is not to earn money, but your purpose is to make sure that your children are educated so that they can create a future generation of your family or even otherwise of educated, well-enlightened people. So suddenly she was able to connect to the job in a much different way than the way she was thinking. And she started her actually engagement and performance level went up, because now there is a purpose to it. So not just purpose-led organization creates a better work culture, better engagement, better way of driving the future for the organization, but it also helps develop individuals in ways which is beyond their self-interest, which is beyond looking at individuals as individuals, but serving a bigger cause. Hence, they all drive towards achieving bigger glory. जी सर. सर आपने बताया कि पर्पस लेड ऑर्गेनाइजेशंस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ एग्जिस्टेंस, और आपने लोगों का भी बताया. अब ये बताइए कि what kind of challenges and obstacles are associated when any organization decides to have a purpose which is contributing to so many other factors than just making money. तो ये बताइए कि वो challenges और obstacles क्या होते हैं जो leadership face करती है to make the organization a purpose-led organization, because आप उस role में हैं. So I'm sure you're facing that on a daily basis. So could you share that with our audience as well? Yeah, I think that's a very good question and a very well articulated one. Look, the biggest challenge is for the senior leadership of the company to first commit to it themselves. सबसे बड़ा चैलेंज है. लीडरशिप वो हो ही नहीं सकती जो दूसरे से कहे वो काम करे जो खुद ना कर रही. सो सबसे पहला चैलेंज ये है कि लीडरशिप को खुद एग्री करना चाहिए पर्पस पे और कमिट करना चाहिए, नॉट जस्ट बाय देयर टॉक बट बाय देयर बिहेवियर एज वेल, राइट? एंड इफ दे आर नॉट विलिंग टू डू इट, then expecting others to do what they are not doing is not going to happen. So I think the biggest challenge is a change in leadership behavior, in the way they think, in the way they operate, in the way they make decisions.
मैंने आपको फार्मास्यूटिकल की मिसाल दी, लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट से एक और मिसाल ले लेते हैं, राइट? एक स्कूल है मिसाल के तौर पे, और मकसद उसका, आप एजुकेशन में पैसे बनाने के लिए भी जा सकते हैं, एंड यू कैन मेक दैट एज योर ऑब्जेक्टिव, या आप कहें कि मेरा आइडिया ये है कि मैं एक पढ़ी लिखी, क्वालिटी एजुकेटेड breed of youngster produce करूं. अच्छा, if the purpose is to produce quality graduates from the school, right? So imagine, and this is what the CEO continues to say, I will live by, because this is what we are. We are not in this just to make money, but we are in this to make sure that we deliver quality education, and come rain, hail or storm, we are not going to compromise on it. Now somebody comes up to him as a leader और से कि सर मेरे पास एक टीचर है जो हायर करना है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है उसमें, या वो सब्जेक्ट का टीचर नहीं है लेकिन सीख लेगा, अच्छा कॉस्ट उसकी कम है, तो इस वजह से आपका बिजनेस बड़ा अच्छा हो जाएगा, योर मार्जिन्स विल गो अप. अगर वो लीडर, इफ ही इज कमिटेड टू द पर्पस ऑफ व्हाट ही इज स्टेटिंग, दैट ही एग्जिस्ट टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, and the reason he's in this business is to make sure there is no compromise whatsoever in imparting quality education, do you think he will make the decision to hire a second grade teacher although he can make more money? The answer is not. But do you think it's a easy choice for the leader, right? So leaders will be confronted with making decisions where their resolve towards the purpose is tested every single day, right? And how strongly they stand by the purpose that they do. And if they can do that, then the whole concept permeates within the organization and everyone starts following it. So सबसे बड़ा चैलेंज है जो सीनियर लीडरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो उस पर्पस से एग्री करती है, क्या उसको कमिट करती है, एंड आर दे विलिंग टू वॉक द टॉक. अगर आपने वो पीस ठीक कर लिया तो कुछ तो आपने अपनी डिसीजन मेकिंग एंड द वे यू बिहेव एंड द वे यू वर्क एंड द वे engage with your people, एक तो उससे ठीक हो जाएगा. दूसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये कि then organization need to start bringing the purpose to life. And how do you bring the purpose to life? It is by sharing every single day stories of your people, that how they are living the purpose, right? I'll give you an interesting example, right? From one of my leadership team members in the very recent past actually. तो हम एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे थे, और वो कॉन्टेस्ट it was driven by certain milestones that they had to achieve. और हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन आवर वैल्यू विच इज इंटेग्रिटी, and also we exist to make improve the lives of people, communities, customers that we serve in, and that's our purpose, right? Not just in terms of improving life, but also improving the way they think, they behave, they act, they visualize the future. So उस contest के दौरान when we reached the final stage, somehow he got to know the score, right, of one of his competitors, right? And the difference between the two was so small that he had something in his hand. If he declared it, he would have won the contest. But because accidentally he found out about the score of his number two, he decided not to declare what he had in mind, and he lost the contest deliberately just because accidentally he found out that if he declares it, he will be the winner, right? That's living the purpose, that's living integrity. And we made sure that we shared the story with everyone, and more or less in every town hall and in every engagement that we do. So very important कि जब आपने पर्पस बनाया है तो उसको फिर आप लोगों के पास लेके जाएं, उनसे कहें कि उसको लिव करें, वो स्टोरीज शेयर करें,
बार बार लोगों के पास उन स्टोरीज को bring them to life so that people understand not just you are saying the purpose, but as an organization, you are committing to it, you are engaging with people, and your entire ways of thinking and working will revolve around the purpose that you define for an organization. So वो challenge भी है, लेकिन उसमें बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है टू ग्रूम योर सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ ईयर. एंड इमेजिन इफ एन ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव क्लोज टू 2000 पीपल in the across organization. So imagine if we produce 2000 uh, people who will lead families eventually. Many of them will lead companies जो कि purpose led organization को देख चुके हैं और वो अपने फ्यूचर में उसको आगे लेके जाएंगे. So that can create a positive spiral within the entire corporate sector. So not just it helps organization in engaging better, in getting more out of their people, but it creates a completely new and fresh breed of people and future leaders who can think in a very different way than just money. राइट. और इस पे मुझे मैं माजरत थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ. और ये बहुत अहम है कि हम लोगों को सिखाएं. मैं बहुत रिसेंटली, कोई मेरे ख्याल में 2-3 महीने पुरानी बात है, आई वाज स्पीकिंग टू फाइनल ईयर MBA student of a leading university in the country. And I was talking about this purpose-led organization, and this is essentially what I was saying, that organization cannot exist for money, but what they do with money is what they exist for. Just like as I said, humans पैसे बनाने के लिए नहीं एग्जिस्ट करते, उससे ज्यादा मकसद होता है उनका. और जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू हुआ, जैसे अभी यहाँ पे भी होगा, तो उसमें सडनली 3-4 लड़कों ने एकदम से काफी एग्रेसिवली कहा कि जी आप हमें ये बता रहे हैं, हमने 4 साल इस बिजनेस स्कूल में पढ़ा कि बिजनेस तो एग्जिस्ट ही पैसे के लिए करता है. ठीक है, तो अब आप हमें कुछ और सबक पढ़ा रहे हैं, तो हम टीचर की माने या आपकी माने. राइट. एंड इट वाज अ वेरी लोडेड क्वेश्चन, बट अ करेक्ट क्वेश्चन. राइट. एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर educational institutes, for business leaders, for generally stakeholders in the society, to make sure that they make people understand there is an underlying reason why business exists. And yes, in the bargain, the business makes money as well. But it is very important कि उनको ये बताया जाए कि असल मकसद क्या है आपके एग्जिस्ट करने का, और उसको भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाया जाए. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी बहुत जरूरी है कि अपने स्टूडेंट्स को ये बताना शुरू करें कि बिजनेस पैसे के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, बिजनेस आपका जो कोर है उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, education industry, sports industry, wherever people are living the purpose, their engagement, their way of working, their way of delivering to the community and the society is much different to the people and organization जो सिर्फ पैसे के लिए जिंदा रहते हैं. क्योंकि अगर आपने मकसद पैसे बना लिया तो फिर आपने पैसे बनाने, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे कैसे बनाए. And that is where you go in a completely different tangent. Your ethics are compromised, integrity are compromised, and you go to any extent to make money because that is what your purpose is. However, if that is not the case, then your decision making is very different to the other one. Gulrukh. Thank you, Waqar sir. Very, very important information you've shared with us. Now that brings me to one other question I have, because we have all sorts, I'm sure we have all sorts of audience. We have business leaders with us. We have the budding future leaders. We have the professional students. So कुछ tips आप दे सकते हैं जो हमारे young professionals हैं, millennials, how can they transform themselves, या अगर organization को कोई tip देनी हो जो कि आप हमारे ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं, how to convert middle level managers who are just managers into purpose driven leaders. Because there's a
my understanding is that there's a lot of difference between a manager and a leader. So how can you contribute by some tips to these young people to transform themselves? अच्छा, जो यंग लोग हैं या मिडिल टियर मैनेजर्स हैं, उनके लिए भी, किसी के लिए भी मैं एक सवाल पूछता हूँ उनसे, और जो लोग भी देख रहे हैं वो अपने तौर पे इसका जवाब तलाश कर लें कि आपको ज्यादा खुशी कब मिलती है। आपको ज्यादा खुशी मिलती है जब आपको महीने के आखिर में या महीने के शुरू में तनख्वाह मिलती है, या आपको ज्यादा खुशी मिलती है जो लास्टिंग होती है जब आपने किसी की, जब वो मुश्किल में है, मदद कर। आपको ज्यादा खुशी जब मिलती है कि जब आपको इंक्रीमेंट मिलता है, या आपको ज्यादा खुशी जब मिलती है कि जब कोई आदमी है उससे सड़क नहीं पार हो रही और वो परेशानी में है और जल्दी में है और आपने उसको सड़क पार करने में मदद कर दी। आपको ज्यादा खुशी मिलती है जब आप अपनी जात के लिए कुछ करते हैं, या आपको ज्यादा खुशी मिलती है जब आप एक अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनका मसला हल हो जाए या उनकी जिंदगी आगे कंट्रीब्यूट कर दे। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक, व्हेन यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन रोल, देन द फिलॉसफी वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे। इफ यू वांट टू क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट इन लाइफ, you will never be able to create it by earning a lot of money. And again, I must continue to emphasize, I'm not against making money, but I'm just saying what you do with money give you lasting happiness. So आप किसी को जरूरत थी, उसका ऑपरेशन था, आपके पास पैसे थे, आपने उसकी मदद कर दी। ये चीज ना सिर्फ आपको तो शायद भूल जाए, लेकिन वो बंदा आपको सारी जिंदगी जब मिलेगा आपके पास आएगा और वो कहेगा, मे बी यू डोंट रिमेंबर, बट यू नो व्हाट, व्हेन आई नीडेड यू, यू वर देयर फॉर मी। सो दिस लास्ट फॉर एवर व्हेन यू लिव अ पर्पस, राइट? एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन की जो मेमोरी है या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है या उनकी जो एंगेजमेंट है, वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इंडिविजुअल्स की होती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस, so imagine if organizations start living the purpose for which they exist, and by the way everyone has it, and I don't care who, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पर्पस ये हो सकता है कि हर आदमी को पास एक आसानी से कम्यूट करने का तरीका हम प्रोवाइड कर देंगे, and that's a good enough purpose. Now in the bargain, will they make margin? Let them make margin, but the objective is that we want to make sure everyone owns a transport so that they are independent and not dependent on public transport, as an example. And imagine connecting this with their entire organization. So which means your decision making will not revolve around कि इसमें मैंने कितना मार्जिन बनाना है, कितना कम बनाना है, बल्कि it will be driven by how do I make sure that more and more people are able to commute from one place to the other in a secure manner, or meeting all the safety standard. क्या वो इस द बार्गेन, अगर वो कहें कि हम एक सेफ्टी के लिए गाड़ी की कोई ऐसा पार्ट यूज कर लें जिससे कि गाड़ी तो चलेगी लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर आप पर्पस लेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप मर जाएंगे ये नहीं करेंगे, राइट? लेकिन अगर आप मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये हर दफा करेंगे, एंड इट विल नेवर स्टॉप। आज आपने बी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, कल आपकी ख्वाहिश होगी और पैसे बनाऊं, आप सी क्वालिटी यूज कर लेंगे, डी क्वालिटी यूज कर लेंगे, ई कर लेंगे, आखिर में गाड़ी टूट जाएगी, एंड यू वोंट केयर बिकॉज यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। सो द मोमेंट यू मेक मनी एज योर पर्पस, there is no limit to money you want to earn, and you can earn, but then you start going, or you have a potential to start going in a direction जो कि ऐसी नहीं है जिसपे कि हमें अपने यंग लोगों को या मैनेजर्स को या लीडर्स को उस तरफ भेजना चाहिए। पर्पस लेड ऑर्गेनाइजेशन या हैविंग अ पर्पस इन लाइफ keeps you in shape, keeps you within a certain parameter to which you need to operate. All you need to do is to explore and define the purpose for which you exist, for you as individual, but also for organization. And it must always be beyond your self-interest. Because as I said, your lasting happiness comes when you make an impact to someone else's life
rather than your own life, right? And that's a universal phenomenon. तो टिप जो भी यंग लोग हैं या बडिंग लोग हैं, वो बेसिक बात यह है कि अपना मकसद तलाश करें. आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद तलाश करें. इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए और क्यों काम कर रहे हैं, उसका मकसद तलाश करें. और अगर वो आपके मकसद से अलाइंड है, तो देन इट डजंट रिमेन अ जॉब फॉर यू, देन इट बिकम्स योर पैशन. Then you start saying, this is my company, this is my job, this is my work, this is my role in taking it forward. You start owning your company, you start owning the work, you start owning the place, you start literally owning the people who work with you, and you'll make sure that you do whatever it takes to make an impact in their life. Right? So, that's the biggest advice I can give to them. Never live for money. Earn as much money as you like, but always remember what you will do with that money, because that is what will give you lasting happiness and fulfillment in life. Gulrukh. जी बकार साहब, थैंक यू सो मच. ये बताइए कि how I don't know whether it's a easy question for you or not. How can an organization measure the extent to which they are living their purpose? बिकॉज हम बिजनेस में या हम हमेशा ही देखते हैं कि हम हमारे क्या टारगेट्स थे और हम कहाँ हैं हमारे. सो इज देयर अ वे फॉर अस टू नो व्हाट इज द एक्सटेंट टू व्हिच वी आर रियली लिविंग आवर पर्पस from the outside feedback or from the inside feedback? So I would like you to just comment on this, please. I think it's a very good question. तो देखिए, दो तरीके हैं. एक तरीका तो है कि आप जो टिपिकल एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वेज होते हैं, आप कस्टमर सर्विस करते हैं, उनसे आप असेस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उसमें ये सवाल होगा कि डू यू थिंक पीपल नो द पर्पस, डू यू थिंक लीडरशिप इज लिविंग द पर्पस, वगैरह वगैरह वगैरह. उससे आपको जवाबात मिल जाएंगे एंड यू विल नो वेदर how many people agree or disagree that organization is living the purpose. But I'll go beyond that. मेरा अपना ख्याल है कि इसको आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होंगे, आपको पता लग जाएगा वो पर्पस लिव करते हैं नहीं करते, राइट? बिकॉज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी सच वेयर पीपल विल बी मेकिंग एन इम्पैक्ट इन वेरी डिफरेंट वेज, like when they work for themselves only, or when organization purpose is defined as making money, right? Those organizations will have a very different culture. And dare I say, as I shared the example, जो ऑर्गेनाइजेशन पैसे के लिए एग्जिस्ट करती हैं, उधर वो चोरी चकारी, गलत काम, लो क्वालिटी वर्क, मिलावट, बनावट, हर चीज आपको उस कल्चर में नजर आ जाएगी. जो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस लेड होती हैं, उधर आपको it will be oozing the purpose that they are living with in their culture. Not just from the leadership, but each and every individual will realize and will make sure that his actions are such that the purpose is being demonstrated in the way they think, in the way they operate, in the way they engage with colleagues, with customers, with stakeholders, with anyone around, right? So there is a way to measure it, which is the employee engagement typically. But I personally think the culture talks, and the culture of the organization will talk every single day. What kind of an organization is it? Is it a money-driven organization, helter-skelter, driven by money? Who cares how the money is earned? Or is it a purpose-led organization, which means the decision making is driven by a bigger cause and not by a narrow money focused approach? So that's more or less the way I would argue that people should be able to see the organization. वो organization जो purpose led होती हैं, उनके employees फर्क होते हैं, उनके leadership फर्क होती है, उनकी बाहर एक डिमीनर फर्क होता है, ब्रांड फर्क होता है. मैं आपको एक और अगेन, क्योंकि मेरे नजदीक ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरह से काम करती हैं जैसे इंडिविजुअल्स करते हैं या सोचते हैं. और हमने अगर आप सोचें
तो हमारे दोस्तों में या फैमिली में या हमारे जानने वालों में मुख्तलिफ तरह के इंडिविजुअल्स के ब्रांड होते हैं, राइट। मिसाल के तौर पे किसी इंडिविजुअल का ब्रांड है, ये झूठ नहीं बोलता, दैट्स अ ब्रांड, राइट, ऑफ एन इंडिविजुअल। ट्रस्टवर्दी है, राइट, क्रेडिबल है, ये सारे ब्रांड हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पर्पस लिव कर रहा है। फिर एक और ब्रांड भी है, पार्टनर, ये गोलीबार है, ठीक है ना। ये इसने वक्त तो दे दिया, आएगा कभी नहीं इस पे, ये हर गलत काम कर देगा तुम्हारे लिए, ठीक। ये ब्रांड है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के भी ब्रांड बनते हैं। और बाहर जब आप जाते हैं अपनी कंफर्ट जोन से, अपनी अपने कमरे से बाहर, तो आपको लोग उस तरह से ही देखते हैं जैसे आपका ब्रांड है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये याद रखना चाहिए, और लीडर्स को जो कि ड्राइव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि उस ऑर्गेनाइजेशन को लोग कैसे देखते हैं। और आप विदाउट गोइंग इनटू नेम, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको ऑर्गेनाइजेशंस को लोग ब्रांड करते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिविजुअल्स को ब्रांड करते हैं। बोलो। Thank you, sir. You are capable of handling all kinds of questions. So that brings me towards the last question I have. Rather, it's just a request कि at Jaffer Group, हमारे group में हमारा भी एक purpose है. We exist to improve the lives of people, businesses, and communities through innovations, through excellence, through how we operate our business. ये बताइए कि थोड़ा सा शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ कि हाउ डू वी एट जाफर आर लिविंग आवर पर्पस, व्हाट आर दोस थिंग्स वी आर डूइंग। तो पहली चीज तो हम देख लें, इस पर्पस को थोड़ा सा डायसेक्ट कर लेते हैं। हम एग्जिस्ट इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं लोगों की जिंदगी इंप्रूव, ठीक है जी, दैट्स आवर पर्पस। नाउ हाउ डू वी डू दैट? हम मुख्तलिफ एरियाज में ऑपरेट करते हैं। हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, हम टेक्नोलॉजी भी करते हैं, हम लार्ज प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। हम कैसे अपने पर्पस को लिव करते हैं कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर हम मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसका चूंकि इम्पैक्ट एक लार्जर कम्युनिटी पे, फार्मर्स पे होता है, तो कम व्हाट मे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, बिकॉज इफ वी डू, वी विल बी इम्पैक्टिंग द लाइफ इन अ रॉन्ग वे, राइट। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने उनकी जिंदगी इंप्रूव करनी है और बेहतर करनी है, तो हम किसी सूरत में अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विसेज, ड्राइव टू एक्सेलेंस, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, उसके अगले हिस्से पे आ जाते हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि हमने इनोवेट भी करना है, तो विच मीन्स हमने हर वक्त नई चीजें लानी है, सो दैट वी टेक द कम्युनिटी एंड आवर पीपल कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड टू अलाइन विद द फ्यूचर and not let them live in the past. So जिसका मतलब ये है कि हम अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को हर वक्त अपग्रेड करें। तीसरे हिस्से पे आ जाए, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल ग्रोथ। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने कंट्रीब्यूट करना है नेशनल ग्रोथ पे, तो क्या मैं टैक्स चोरी करूंगा? कभी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने किया तो मैं आई एम नॉट लिविंग माई पर्पस, ठीक है। विच मीन्स एज जाफर ग्रुप वी go take incredible amount of care to make sure that everything we do complies with the law, right? And we don't do anything which even with an iota of doubt can dent the national growth, and we play our part. So all three elements, we have brought them to life and we continue to practice it. इसलिए अगर आप जाफर ग्रुप का बाहर किससे पूछे ब्रांड क्या है, वो पहली चीज पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं ट्रस्टवर्दी। Trust is more or less becomes synonymous with the work that we do and what we do. That is because over decades, we have built a purpose of why we exist. So not just, the senior leadership, many people who have been part of our group for years and years and decades, and more importantly, the young people जो कि अब बड़ी तादाद में हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम ये स्पिरिट ऑफ पर्पस इम्बाइब करते हैं फ्रॉम द डे दे ज्वाइन अस, दैट दे डोंट कम हियर टू लुक एट देमसेल्व्स अलोन,
The purpose of joining us is beyond self interest. It is all about fulfillment, it is about lasting impact, it is about creating a, a breed of leadership, work, and culture which breeds a purpose led life and a purpose led business. Gulro. Thank you so much, Vikas, for sharing your views and your thoughts and your guidance on this very, very important topic of having purpose led businesses or purpose led organizations. I think हमारा जो time हमारे dialogue का था वो पूरा हो गया. Now we will open the floor for questions. If there are any questions from the audience that they would like to ask Vakar Saab, this is an opportunity. You can ask him. It will give you tips for better understanding and better learning of this topic. So please go ahead and ask questions. Vakar Saab is here. Uh, and you can just type in your questions and I'll read them out to you. Read them out to Vakar Saab and he will try to address them. Okay, sir. I've received the first question. What advice would you give to people looking to form their own startups? How can they incorporate the idea of being purpose led from the very beginning? Bakar sir? अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि इसलिए कि I think the good news is that a lot of new entrepreneurs are coming in the country and I strongly believe पाकिस्तान में हजारों की तादाद में नए entrepreneurs चाहिए. अच्छा अच्छी खबर ये है कि अगर आजकल के दौर में देखें तो everything is driven by a use case कि आप कौन सा मसला सॉल्व कर रहे हैं अपनी स्टार्टअप बनाने से. अच्छा द मोमेंट यू थिंक लाइक दिस आपका पर्पस वहीं से बन जाएगा कि और अगर हम रीसेंट पास्ट की मिसाल ले लें तो करीम या उबर जैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो मसला क्या सॉल्व कर रहे हैं. वो लोगों को पॉइंट टू पॉइंट आसानी से घर पहुंचाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. एंड दैट्स अ मैसिव पर्पस. इट इज अ पर्पस इन इटसेल्फ व्हिच इज ड्रिवन बाय द यूज केस कि उन्होंने किसी भी तरह मेकिंग श्योर इन अ कंफर्टेबल क्वालिटी अफोर्डेबल वे दे कैन गेट पीपल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर विदाउट बॉदरिंग अबाउट कि मैंने टैक्सी बुलानी है वगैरह वगैरह. So because everything is driven by a use case, you are solving a problem. आप में सिर्फ उस प्रॉब्लम को देख के आपने देखना है इसका बड़ा इम्पैक्ट कहाँ डाल सकते हैं और जहां आपको नजर आ जाएगा क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में ही अपने पर्पस को तलाश करें. एक दफा उस पर्पस को डिफाइन कर लिया तो फिर अपनी डिसीजन मेकिंग उस पर्पस के साथ करें. और बहुत सारी फॉर एग्जांपल मैंने कल एक इश्तार देखा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है 10 मिनट में हम डिलीवर करेंगे. राइट. सो if you can really make it happen and if you believe in it, so that means all your decision making will be to make sure कि हर कस्टमर को हम उसके वक्त के मुताबिक अपनी डिलीवरी दे सके और कस्टमर अच्छा खाना वक्त पे खा सके या उसकी जब जरूरत है तो उसको जब हम पहुंचा सके. एंड दैट डिफाइंस द पर्पस. राइट. सो मेरा ख्याल में जो आजकल नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय अ यूज केस. एवरीथिंग इज ड्रिवन कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी है कि वो अपने पर्पस को डिफाइन करें. लेकिन सिर्फ मैं एडवाइस ये जरूर दूंगा कि खुदा का वास्ता पैसे बनाने को अपना मकसद ना बनाए. और अगेन मैं दोबारा रिट्रेट कर दूं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं पैसे ना बनाए. खूब पैसे बनाएं लेकिन हलाल के पैसे बनाएं, ठीक तरीके से पैसे बनाएं. उस पैसे से जो आपने मसला सॉल्व करने निकले उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से सॉल्व करें. राइट. एंड यू विल क्रिएट अ मैसिव purpose led organization revolution in this country because startups are booming. Gulru. Thank you, sir. Okay, there's another question. How important is it to engage leadership in a purpose-led organization? How do you, because you have all sorts of people in an organization,
तो जो leadership, because as we know that it is top down, the culture or the approach of an organization. So how do you engage the entire leadership to be aligned with the purpose of the organization? अच्छा, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, अगर कोई मुझसे कहे ना कि एक दफा तुमने पर्पस डिफाइन कर लिया, उसके बाद तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा कम्युनिकेट, 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 राइट, एंड कम्युनिकेट in such a manner that people are able to relate to the purpose, right, and build stories around it. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जब पर्पस लेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज द टोन इज सेट फ्रॉम द टॉप, इज द रोल ऑफ द सीईओ, राइट. एंड once CEO commits to a purpose, then his leadership, उस पूरी लीडरशिप ने उस पर्पस को, they have to walk the talk. Because, as I said, many things you communicate in your town hall, in your speeches, in your written communication. But while this communication is important, there is no better communication than for you to walk the talk, right? कि आप वो करें, करके दिखाएं जो आप कह रहे हैं. अगर आप वो करके नहीं दिखा सकते जो आप कह रहे हैं, तो आपकी सारी टाउन हॉल, सारी तकरीरें, सारी रिटन कम्युनिकेशन वो बेकार हो जाती है. सो बहुत जरूरी है. तो यू नो, जस्ट टू आंसर दिस शॉर्टली, extremely important to engage leadership, extremely important to have leadership which is walking the talk and not just talking the talk. Thank you, sir. So there's another question that I have received on my WhatsApp, so I'll just read it out to you. Uh, this has come from YouTube. Which people are a better fit for a purpose-led organization? Individuals aware of their purpose, or those who are not aware of their purpose at the time when they join the organization? I mean, how easy it is to align what kind of people to your purpose, and given that ones who are not aware, how the organizations give them room or shape them into purpose-led individuals. अच्छा, जो ये कहना कि X category of people fit a purpose-led organization better than Y category of people, I won't agree with that. Unless लोगों की वैल्यू सिस्टम में मसला हो, वो तो एक हम उनको अलग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो मेरे नजदीक किसी ऑर्गेनाइजेशन में होना ही नहीं चाहिए. लेकिन जो लोग जिनको ये इस बात का एहसास है कि it is better to make an impact to other people's life and live for others instead of just themselves. And I'm deliberately using the word just themselves. यानी इसका ये मतलब नहीं कह रहा कि मैं तुम अपने आप का ख्याल ना रखो, वो भी रखो, लेकिन वो मकसद नहीं हो सकता. तो अगर ऐसा कोई भी आदमी जिसको कि ये अंदाजा है कि वो जब दूसरों को या एक बिगर कॉज को सर्व करता है, जो मेरा ख्याल में हर आदमी ने अपनी जिंदगी में किया होता है वन टाइम और दी अदर, वो छोटा हो बड़ा हो, लीडरशिप पोजीशन में है नहीं है, हर किसी ने अपने बचपन से लेकर बड़े होते तक कहीं ना कहीं लोगों में इम्पैक्ट डाला है, मदद किया है, सर्व किया है, कोई ऐसी चीज कर दी जो नॉर्मल से हट के. तो हर वो आदमी जिसको कि इस बात का अंदाजा है या अंदाजा दिलाया जा सकता है और वो अपनी जात से बाहर निकल के सोच सकता है, I think he's a perfect fit for a purpose-led organization. जिनको अपना जिंदगी का मकसद पता नहीं है, देखिए, people like me exist to groom the younger people. लीडर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो आके कहे तुम फाइनेंशियल नंबर कर दो, ये कर दो, वो कर दो. लीडर का काम है कि वो लोगों को बताए कि आपने कैसे बिजनेस को आगे लेके जाना है, क्या तरीका है. ना सिर्फ दे अचीव द व्हाट पार्ट, बट दे आल्सो टीच ऑल द टाइम द हाउ पार्ट, सो दैट इंडिविजुअल्स लर्न द राइट वे ऑफ गेटिंग इट. पैसे तो देखें हर कोई कमा लेता है, लेकिन पैसे आप कैसे कमा रहे हैं, ये लीडर का काम है समझाना. कि आप चाहे तो चोरी करके कमा लें या चाहे तो आप अपना पर्पस लिव करके कमा लें. तो आई थिंक एनीवन विद द राइट वैल्यू सिस्टम and getting the right leadership will become aware of the purpose, and it's the job of organization
जो भी ऑर्गेनाइजेशन पर्पस लेड होती हैं उनमें जो लोग आते हैं, खा वो अवेयर ना भी हो, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाते हैं, बिकॉज इट कम्स नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग to be part of a bigger cause, and that comes natural to human being. Something other than that to me is not natural, right? So वो खुद ब खुद उनको फिर समझ आ जाएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करते रहेंगे, फिर वो यहाँ पे हैं कहीं और चले जाते हैं, they will make an impact to other people's lives. Thank you, sir. So we have 10 more minutes and we are getting questions. Sir, एक सवाल आया है कि what advantages do purpose-led organizations experience if you compare them to traditional organizations who, like you referred to, money-making businesses? So can you just differentiate between the two and the advantage? इसका सबसे आसान जवाब ये है कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एवरी इंडिविजुअल इज टू हिज ओन, राइट? वो अपने लिए आता है, अपने लिए काम करता है, घर चला जाता है, उसका कोई मकसद नहीं होता, ठीक है? जो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस लेड होती है उसमें जब बंदा आता है तो वो अपने लिए नहीं आता, ही इज कमिंग फॉर अ मिशन, ही इज कमिंग फॉर अ कॉज, ही इज कमिंग बिकॉज ही नोज दैट when I do something right, it impacts not just me, it impacts a much bigger community and has a much bigger cause. So सबसे बड़ा एडवांटेज पर्पस लेड ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि वहां के जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं, उसके काम को ओन करते हैं, उसकी लेगेसी को ओन करते हैं, वो प्राइड लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ द वे ऑर्गेनाइजेशन वर्क. And every time they talk about their organization, you can see passion oozing out of them. जो लोग ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, which are typically driven by money, उनको आप कभी भी नहीं देखेंगे प्राइड के साथ लोगों की बात करने की. वो हमेशा बात करेंगे, यार मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, पैसे जैसे ठीक बन रहे हैं, right? They have nothing beyond. It's a hollow life, you know. So people who are part of the purpose-led organization, their entire demeanor, way of talking, way of looking at life, way of looking beyond the 8 to 5 work that they do is very different to that of those who work for a traditional organization. And as a consequence, जो purpose-led organization है उनमें employee engagement बहुत high होता है. जी sir. So any other question? If we okay, how would you recommend someone to reduce friction and increase synergy between the different departments in an organization? I think this requires a long answer, but आप अगर briefly इसको address कर दें. देखिए सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने कहा कि what is keeping you glued to a single direction? And that's the purpose of the organization. So if you know why you exist in this organization, that automatically creates less friction. Now, my route to achieving the purpose can be very different to, for example, your route, Gulrukh, to achieve that direction. And nothing wrong with that. As long as we both have the same passion to live our purpose. बहुत सारे लोग बहस इस चीज में लग जाते हैं कि मेरा रास्ता ठीक है, तुम्हारा रास्ता ठीक है, और वो एंड ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द एंड ऑब्जेक्टिव, एंड वंस यू नो द एंड ऑब्जेक्टिव इज कॉमन, देन इट इज अबाउट डिसाइडिंग द मोस्ट ऑप्टिमल राउट टू गेट देयर, राइट? अच्छा, उसका जो सबसे आसान तरीका है जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सीखा था, उसको हम कहते हैं ओपन कम्युनिकेशन. जितना आप ट्रांसपेरेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी चीजें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने में, अपनी बातें करने में, अगर आप एक चीज से डिफर करते हैं तो उसको ब्रिंगिंग इट ऑन द टेबल, उतनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्शन कम हो जाती है. जिन ऑर्गेनाइजेशंस में गॉसिप्स होती है, कॉरिडोर डिस्कशन होते हैं, सामने बात नहीं करते, पीछे से जाके बातें कर रहे होते हैं, उधर इट ऑलवेज लीड्स टू फ्रिक्शन. मेरा फलसफा हमेशा से ये रहा है मैनेजमेंट में, एंड इट हैज डन वंडर्स टू मी. जहां मैं दो लोगों को सुनता हूं कि वो इधर उधर बात कर रहे हैं किसी और के मुतालिक, मैं दोनों को अपने कमरे में बुला लेता हूं. मैं कहता हूं यार मेरे सामने बात कर,
एंड सडनली व्हाट इट डज इज कि लोग मेरे पास आना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जब वो किसी और की मेरे पास आके बात करेगा मैं उसे बुला लूंगा, मैं कभी सामने बात कर लेते हैं. बट व्हाट इट एक्चुअली डज इज दैट it creates an open communication culture where people are not intimidated to have tough discussion. हमारे यहाँ क्या होता है कि हम आसान डिस्कशन तो बड़े मजे से कर लेते हैं, लेकिन जहां जरा मुश्किल डिस्कशन होता है हम वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. दैट लीड्स टू फ्रिक्शन. सो द बेस्ट वे to avoid it is to have more open communication and learn to have tough conversation, difficult conversation in a civilized environment, and it will automatically take the friction away. And always remember, purpose is the one uniting factor in creating a less friction or frictionless organization. Thank you, Waqar Saab. I think we are nearing the end of our session, and we do have a couple of other questions, but I think we will now, close our session. So, sir, this series of webinars that we have started is also coming out of our purpose of Jaffer Group to contribute to the lives of people and communities, and of course businesses. And this is a series of sessions that we have planned, and we are planning to address different aspects of management so that we can reach out to the younger generation and the future leaders and give them tips and share our leaders' experiences so that it can help them become business leaders of the future. So, inshallah, our next session will be in January. And मैं आपको फिर हम तकलीफ देंगे maybe for some other subject or topic to address our audience. So thank you very much, Waqar Saab, for taking time out, and thank you very much to all our audience and viewers who have taken time out to listen to our talk. And inshallah, you will see that we will keep bringing to you interesting topics, useful topics, with the experience of our leadership team, so that this could be our small contribution to the young generation or the academia students coming out of the professional institutions. Thank you very much, everybody. God bless you and have a healthy life. Thank you, Waqar Saab. Allah Thank Hafiz. you. Thank you, brother. Thank you.